Okay, so gentlemen, the recording is started, and today's lecture और जितने भी हम lecture ले रहे हैं, they are very very important if you people are interested in the area of cyber security. So gentlemen, people like you, trained people like you, sitting in the SOC, for example, they will be, as I said earlier, they will be collecting the traffic, traces, logs, alerts, information, critical events, whatever you call it. Now, once you have this thing, now you have to analyze. एनालाइज में क्या करना है? एनालाइज में ये जो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि अगर अभी आपको जब ये 4 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन दे दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनालिसिस क्या है, और फिर उसके बाद जेंटलमैन, हम अगर आपने एनालिसिस के बाद उस मसले को हल कर सकते हैं तो कर दें, कोई मसला नहीं, दैट्स ग्रेट। और अगर नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने सीनियर को रेफर कर दें, जिसको हम कहते हैं एस्केलेशन कर दें, ठीक है? ओके, और ये सारा काम हम आज करना चाहते हैं बाय यूजिंग द सिक्योरिटी ओनियन, अगेन by using the security onion. And in the security onion, gentlemen, our intentions are to study the SGUIL, SQL. Number 2, Kibana, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, Kibana. And number 3, Squirt. Hoping that you know about these things, but नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, एटलीस्ट मकसद हमारा ये है, ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर होने चाहिए। तो मैं पहले इन 4 बातों को एक्सप्लेन करता हूं जो मिडल में मैंने लिखे हैं, और फिर हम इन टूल्स की तरफ भी आते हैं, अपनी स्किल्स भी बनाते हैं, एनालिसिस को भी एक्सप्लेन करते हैं। थिंग्स विल बिकम इंशाल्लाह वेरी वेरी क्लियर। क्यों बनोरी? यस सर, इंशाल्लाह। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमने करेक्टली आइडेंटिफाइड, आपने एनालिसिस किया और जो इवेंट था आपने कहा इसको आइडेंटिफाई कि बिल्कुल ये सही आइडेंटिफाई किया सिस्टम ने, ये आपका काम है कि आप बताएं कि ये वाकई जो कुछ सिस्टम ने कहा है ये वाकई हुआ है, करेक्टली आइडेंटिफाइड। नंबर 2, फॉल्स पॉजिटिव, इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड, सिस्टम ने इनकरेक्टली, अभी एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, जस्ट अभी मुझे सिर्फ लिखने दें, आइडेंटिफाइड। देन इज द ट्रू नेगेटिव, correctly rejected. And the last one is the false negative, सबसे खतरनाक, incorrectly rejected. ये 4 बातें I want to share with you. Gentlemen, नंबर 1 जो मैंने कहा ट्रू पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं ये लूंगा कि एक अटैक हुआ जिसने एक अलर्ट जनरेट कर दिया। मिसाल के तौर पे एक आपके पासवर्ड के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, आपके राउटर के ऊपर, किसी भी ऊपर भी, क्योंकि आपको पता है हर चीज का पासवर्ड होता है। तो जेंटलमैन आपके पासवर्ड पे ब्रूट फोर्स की गई और आपके सिक्योरिटी यूनियन ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, पकड़ लिया, और जब आपने देखा तो वाकई आपके जिस सिस्टम को उसने पॉइंट आउट किया उस सिस्टम के ऊपर बहुत से पासवर्ड्स चेक किए गए थे। तो हम कहेंगे कि ये वाकई एनालिसिस कर रहे हैं ना, हमारे पास एक इवेंट आया है, हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और एज ए एसोसिएट लेवल का पर्सन हमने कहा कि बिल्कुल ठीक, ये हुआ है।
It means it is correctly identified by the system. And then you verified it. Person like you verified it. Number 2, false positive, which is incorrectly identified. इसका मतलब है कि अटैक नहीं हुआ था लेकिन इसने फिर भी आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे यू इन्वेस्टिगेट अनदर ब्रूट फोर्स अलर्ट and found that it was just some user who mistyped their password a number of times, but not a real attack was there. आपने देखा होगा बाज़ औक़ात आप भी काम कर रहे होते हैं, आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पीसी की रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवानी थी, उसके लिए मुझे यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए था, लेकिन 3 साल के बाद करता है किसको पासवर्ड याद होगा कि मेरा पीसी में क्या पासवर्ड था। तो अगर मैं कोई 4-6 पासवर्ड ट्राई मारता हूं तो सिस्टम ने तो उसको आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन एज ए एनालिस्ट आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं ये रियल जेन्युइन यूजर था, उसने अपना 5-6 दफा ट्राई मारी और नहीं हुआ, इसका मतलब कोई अटैक एटलीस्ट नहीं था। इसका मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम। कुछ बात समझ आ रही है बनोरी? यस सर। ओके, तो इस किस्म के आपने आप क्या करना होगा, इस किस्म के अलर्ट्स को सिस्टम से रिमूव कर दें, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। मतलब इसको रखना है, इसके ऊपर मिसाल तो अगर ये आप अपने सीनियर को भी दें कि जी तुम भी देख लो कि एहसान ने अपने ही सिस्टम के ऊपर 4-6 दफा पासवर्ड दिया या कोई ऐसा काम किया जो कि कम से कम अटैक नहीं था। ठीक है, तो लगता है कि ताबिश जो है वो पढ़ने के साथ साथ अपनी टीचिंग भी कर रहा है। यस सर, टू वे सर, टू वे कम्युनिकेशन। अच्छा चलें, तो हम बात कर रहे हैं मोहम्मद about the very important topic which is being recorded as well, and the topic is about the person like you which is sitting in a security operations center, and basically the system is there, like for example your security onion is there, for example your squill is there, and you know in your squill you have the snot there. You have read about these things. We have done in very much detail these concepts. Probably that they are available as a video lecture as well. So gentlemen, and probably I have provided you as well these lectures. So gentlemen, we can say that this system, your system like SQL, on the back end we have said that my SQL database is there where all this information is recorded, saved. So recording is done, collection is done, good. Now person like you have to analyze it, whether it is a genuine alert, which means really it happened. If it is like this, we say it is correctly identified by the system and you are verifying it. So what will be the answer? You will call such an alert as true positive. True positive. And how you will identify this? We will start in a minute our security onion, and we will start our SQL, and we will verify that this something is correctly identified, which means I am verifying based upon some analysis, and I am saying that this is something which is correctly identified by the system. So it is a true positive alert. True positive alert. Make sense? Makes sense, Muhammad? But it may be something like this as well, that an alert has been generated by the system, which has been saved in like a PCAP file, for example.
But when you analyze this alert, what happens? You found that it was not correctly identified by the system. So on the basis of this, you say that this alert number 2 is not correct, it is incorrectly identified by the system. So we call that it is a false positive. Then is the true negative, which means that the system has not collected not generated an event. Why? Because nothing has happened. Because nothing has happened. True positive. And finally, which is much more dangerous, false negative. Something happened, something bad happened, but the system has not collected it. So on the basis of this, and why it is more dangerous? Because something bad has happened. When no alarm is raised, when an attack has been taken place. If the alerts are true positive and true negative, it means that the system is working fine, which we want. Yes. If it is true positive or true negative, by 1 and 3, it means the system is working fine. And if it is false positive, the system has done something wrong, but not too much dangerous, because it was identified and you found that it is not dangerous, so you throw it out, fine, no problem. But Tabish, the most dangerous part is, Muhammad, the most dangerous part is false negative. That was rejected by the system, not collected by the system, and this happened. Correct? सर ज़रा ट्रू नेगेटिव का आप दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ट्रू नेगेटिव, बिल्कुल जी. एक इवेंट नहीं, एक कोई ट्रू, इट इज ट्रू नेगेटिव आपने पूछा. ट्रू नेगेटिव. So the true negative is the one, for example, an event with no attack has taken place and no detection is made. Attack भी नहीं हुआ और उसको कलेक्ट भी नहीं किया गया. जब अटैक नहीं हुआ तो किसको कलेक्ट करें? यानी कि रॉन्गली कोई चीज नहीं बता दी आपको, एक चीज नहीं हुई. मिसाल के तौर पे आपके पासवर्ड के ऊपर अटैक नहीं हुआ, आप पर डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक नहीं हुआ, आप पे डीएनएस का अटैक नहीं हुआ, आप पे कोई अटैक नहीं हुआ और ना ही इसने बताया है, विच इज गुड. इसलिए ताबिश ने कहा कि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव का मतलब है सिस्टम इज वेरी गुड. जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो काम कर रहा है. देन वी सेड कि अगर इट इज फॉल्स पॉजिटिव, इसका मतलब कि he identified something and then you tested and you found no, this was not happened. This has not happened. At least the system is not on a risk. But this last one, the fourth one, is the most dangerous. It means something happened to the system, but the system has not collected it. The system has not collected it. So this is called false negative, which means when no alarm is raised when an attack has taken place. Make sense? Yes, sir. So gentlemen, now your job is कि आप स्पेशली जो फोर्थ पार्ट है, और अगर आप 1-2 में भी आपको मसला है, इवन 3 में भी मसला है, तो then gentlemen you have to inform, you have to refer this problem immediately to your senior. जी देखें ये सिस्टम ने नहीं पकड़ा, जो कि अटैक तो हुआ है, नुकसान तो हो चुका हुआ है या इन प्रोग्रेस है, लेकिन सिस्टम नहीं बता रहा. तो फॉर दिस gentlemen what we use the security onion.
And in the security onion, we use the SQL. And in very much detail, probably last week या उससे भी last week में मैंने पूरा आर्किटेक्चर आपको इसका समझाया, सिक्योरिटी यूनियन का। आपको बताया कि इसमें किबाना कहाँ पे है, आपको बताया कि यहाँ पे ELK कहाँ पे है, यहाँ पे SQL कहाँ पे है, स्क्वाड कहाँ पे है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं। तो आज हम इस टूल्स को इस्तेमाल करके ये जो 4 एनालिसिस का काम है ये आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। मेक सेंस? सो होपफुली यू विल बी interested to see all of this. So let's start the task, which is being recorded as well. So gentlemen, I start your good friend Cyber Ops Security Onion. So I hope that you also have installed the security onion on your laptop as a virtual machine. Now, gentlemen, you can see I start it. So Muhammad and Banori, I think you will be happy that your friend Tabish has joined our Cisco lab as well, and he's teaching a course at Ikra University, cybersecurity course at Ikra University as well. So he has started his career. So he's also available in the UT as well now, in the Cisco lab. Okay, so hopefully that the security onion will start in a minute. So gentlemen, the username and password in our case is analyst, ANALYST, because security onion is mostly used by as a security analyst, and the password is cyber ops. It depends. आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टार्ट विद द लॉगिन। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, जैसे आप यूबंटू इंस्टॉल करते हैं तो सिक्योरिटी onion भी कोई नई चीज नहीं है, वही है। बट मैंने आपको बताया कि वी कॉल्ड इट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई? Because the tools, some of the applications has been added to the kernel of the Linux kernel, and it is used then for a special purpose, and the special purpose is monitoring for the security onion. If you are on a Kali Linux, you are on the attack part, you are on the penetration testing for example. लेकिन आज हम उस पर काम नहीं कर रहे, इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे, ताकि आपको ये चीजें मजा दे। ओके जेंटलमैन, तो सबसे पहले security onion has started, and we start with the SQL. If you have installed this device, gentlemen, I will be happy that you may do these tasks along with me. So I start the SQL. Let me know, may I tell you that SQL is not a web-based application. It is a very powerful tool, but it is written in Tcl. So it is a different story. We are not the developer of the SQL. That's the reason we are not worried about this. But just to tell you that this device, this application has been written in a scripting language which is called Tcl, TCL, Tcl. Gentlemen, you can see here, Muhammad, if you are with us, that the SQL host can be a local host. Even it can be used for a remote as well, which is not here.
but because we don't have the SQL on a remote machine here, we have installed on a local machine. That's the reason we have the option for a local host. But in large machines, in large organizations, this security onion may be on a remote machine, so then it will become a remote host. Then definitely be used, because it is an application, it will be using some port. So it is using a port 7734. So you have to give the username and password. Again, the password is, username is analyst, and the password is CyberOps. Gentlemen, here what is showing you? It is showing you that on which ports it should collect. So there is, for example, it is showing that it may collect on ETH0, Ethernet 0 port. It may be on a OSIC, which is a host-based intrusion detection system. So it's your choice. Or you may collect on all the interfaces. So you can say select all. So it's your choice. Right, gentlemen? So you can tick like this, or you can tick like this. So for the experimentation purpose, I'm saying that monitor all the three interfaces, or all the three networks. And I say start SQL. So SQL started. So gentlemen, we have talked about this, that gentlemen, these are the list of events. So somewhat very much similar to a Wireshark, where we have the packets on the top screen, on the top window. So here again, we are on the top window, we have the alerts. And who has generated these events, alerts? So we can see here the agent status. So gentlemen, they have been, so it is very must that we should have at least the SNOT, PCAP, and OSIC, all the three. You know what is SNOT? SNOT is a network intrusion detection system. OSIC is the host-based intrusion detection system. We have covered all these material in the previous lectures, but just I am revising क्योंकि तकरीबन week 10 days हो गए हमने ये चीजें नहीं पढ़ी, तो just I am revising. And PCAP, you know, it is a full log. So which means, and gentlemen, one thing more, you are seeing here an alert IDs, and these alert IDs starts from either 5, maybe 5 is identifying that that has been captured by this, from this network. Security on in import, if it is by, and this has been taken from the SNOT, then this is again a security on in import, and that has been from the PCAP. So you may find here starting with 5, starting with 1, starting with 2, 3, 4, and 5, and not 6. Okay, gentlemen. So it is, you can see here 1, 2, 3, if you can. Yeah, you can see here 1, you can see here 5. So the most of the alerts have been generated by the SNOT. And what is SNOT? Network intrusion detection system. Network intrusion detection system. Good. Gentlemen, so these are which means most of the, I can say, alerts are generated by the SNOT. Good. Then gentlemen, we have talked about that these are the events, alerts, and definitely if it is SNOT, for example, the SNOT will generate the alert based upon when some rule will be violated. When some rule will be violated. For example, if I click the first one, the first alert,
I explain what I mean by ST, CNT, sensor, and all this. I explain. But why it has been captured? Because of some rule. And that rule you can see here, show rule. So you can see here that, gentlemen, this is the rule. Some HTTPS host issue seems to be there. Something related to the HTTP. Because something related to the HTTP happened, because of which the slot generated this alert. Good. And if you want to see the data as well, you can see the data as well here. You can see here the data as well. And basically it is a, if you are comfortable, and you can see here, as I said, it is using port 80. Source is port 80 with an IP address this. So it makes sense, HTTP. And the destination port is 49,000 something. You can see here. So gentlemen, and the protocol field is 6, which you must understand that this field of protocol is from the IP, from the network header, and this protocol shows to which protocol in the transport layer this need to be given, and the 6 represent that it should be given to the TCP. That's the reason it is using the sequence number, acknowledgement number, if you remember, window size. And if you are not comfortable with this, no problem. I am here to just give you a brief. Sir, I'm entering CyberOps. It gives me incorrect password. Your username is Banori. Okay, resolved. It is good. Muhammad Ali is saying that, sir, what by mean? Sorry, Muhammad, I am not able to understand what you have written at 8:43. Sir, what by mean? What offer? Are you here with me, Muhammad, or you have left? Okay, I think he is left. Okay, so let me continue then. So gentlemen, now it is okay, sorry, I was especially, this is not for Tabesh, it is for Banori. I want to show you the network header, network layer header. I can show you here. You can see here protocol. So this protocol is showing that if it is written 6, it means it should go to the TCP. If it is written here 17, it means it should go to the UDP. It means this packet, this segment has been generated by either by TCP or UDP. So here the protocol shows, this protocol value shows that it should go either to the TCP or UDP or ICMP. So here you can see, gentlemen, that this value of protocol. So where I have seen the protocol, where 6 was written, source address, destination address, version of the protocol, header length is, what I mean by 5? This is the IP header, this is the TCP header, and this is your data. So gentlemen, I think we should be happy that you have everything available to you. So let's see this one first. It has the source address, destination address. You can see here, gentlemen, that your TCP header has the source address, destination address. 2 words covered. Then if I go to back to my SQL, and there version is 4, header length is 5, type of service has not been defined. The total length is 1361 bytes.
flag is 2, offset is 0 because it is not has been fragmented. Checksum is 2093. You can see here checksum, fragment offset, flag. So all these total length. Here was the TOS, type of service, total length. So all this header, you can easily see the header of the IP. You can see here Banuri. Then is the TCP header, because it has shown that the protocol field is 6. Protocol field is 6. That's the reason it should go to the TCP and not to the UDP. When it will be for 17, you will see that it is not TCP, but it is UDP. So you can, now I show you the TCP header, for example. I can show you the TCP header. TCP header. मैं अपने टॉपिक से बदल गया हूं, लेकिन इसलिए बदला हूं थोड़ा सा कि बनोरी ने हमारा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क का कोर्स भी नहीं पढ़ा हुआ, तो उसको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी. तो देख जेंटलमैन, हियर सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट. इफ आई कैन ओपन हियर source port, destination port, then sequence number, acknowledgement number, sequence number, acknowledgement number, window, checksum. So which means all of this header of 20 bytes is shown here. And it's telling you that in the flags, the ACK is there. This is an acknowledgement packet. तो इसका मतलब इससे पहले भी कोई ट्रैफिक गई है. हमने जब पहला पैकेट अलर्ट का आया, that was an acknowledgement one. And it is showing you HTTP 1.1 to 200. अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई हुई है कि 200 का मतलब है कि सक्सेसफुल. 200 का मतलब है सक्सेसफुल. Then you can see in the hags, in the text. Anyhow, so you can see here the data, the protocols, and the most important, the rule. Because SNOT is a rule-based NDIS. तो ये तो आपको एक ब्रीफ हो देना था. अब मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं. जेंटलमैन, मेरा टॉपिक ये है कि सबसे पहले है स्टेटस. So you can see in the status there are 3 colors. One is the red, one I may call as the orange, and the last one is the yellow. Yeah, you can see here the yellow. And this RT means it is a real time event. इसका मतलब है कि जूं काम हो रहा होता है, ये डिवाइस उनको कैप्चर कर रहा होता है. So gentlemen, the red one is the most critical. Need your attention. This orange one, you can give some time. But the yellow one, you can ignore. Or you can see it later. But red one, important. Okay? Then is the count. Like for example, you have blocked the ICMP packets, for example, and somebody is pinging you. And he is sending you 1000 packets. So 1000 count will be there. So it means this something happened 1000 times. Now you can see, for example, I will take a little small number with small number. Here, for example, with the number 4. You right click it. Sorry, you right click it, because what 4 event happened which have been correlated, which have been combined. So you can right click it and you can see view correlated events. See correlated events and click it. All the 4 events will be visible to you. And at what time, what was the source, what was the destination, what was the source port, what was the destination port, to which TCP protocol it should go, and
which transport protocol we should go, which is TCP in this case, and what is the message. So which means this is something, a new something you have seen. Good. Nothing has been, I have accelerated that the region is visible. It may be vacant as well. So I will show you how to escalate. If you cannot cover it, so definitely you will be escalating it then. Okay. Now, for example, I'm interested in this Trojan ransomware, something like this. So I can, because there is only one, so there is no need to view the correlated events. But definitely it and you can see it is using TCP, IP, UDP, and data. You can see on the bottom of my screen. Now, gentlemen, the next step, what we are doing? Analysis. Gentlemen, I go to the alert ID field of this event and I right click it. And I can use any one of them, like Wireshark, like Transcript, and then I will be using the network miner as well. So I will be explaining you all of these. Gentlemen, I use, for example, the Wireshark. So it will, you have used the Wireshark, you know that Wireshark will display you the details of a complete detail. In this case, it is only one packet, but if it is even 50 packet, it will show you. And you can see here, it is only one packet which generated this something alert, and you can watch all the headers, like what is the data. The data was this, length is 25 bytes. The UDP protocol fields, you can see the IP layer fields, you can see the data link layer fields, so that you can analyze that what was the source, what were the MAC addresses, and all this, what we have covered in our subject. Then, after the Wireshark, you may be, especially when it is some download may be there, what you need to do, gentlemen? Gentlemen, you may close it, again go to the alert ID, right click it, and click the network miner for further investigation. So here you can see two hosts. One is 90.2 blah blah, and you can see here as well the destination is 90.2.1.0 and the source is 172.16.4.193. Furthermore, you can see here the details of these. You can click it here. What is the MAC address? What is the vendor? And only one packet received, 53 bytes. You can see the other one as well. This may be of interest for you. Furthermore, a lot of information may be there. For example, you may have downloaded something, some file, or some images, or some messages, or some credentials. Although in this one which we are studying for the time being, does not have any such thing. But if it is some download, you will find these files here in the network miner. Let me see that is there any other event where some download has been occurred. Some download. Let it be with the DNS query. And in the DNS query, I go to the alert and I go to the network miner and I open it. So there are 3 hosts involved there. But again,
one of the DNS is there, but no file. Okay, why it's closed? Let me see some heavy thing. Maybe Trojan backdoor. Again, it is only one, but not bad to study. Minor. Yeah, here is the file. Here is the good thing. Source, destination. Source is I don't know whether it is source or not. Which one we have taken, but I may see some question is there for me or not. Sorry. Nothing new. I don't know why it happened. Anyhow, let me go back to this interesting topic. So, gentlemen, what I was selected is 192.168.1.96, which is a window-based source, and destination is 198.1.85, and showing that it is a Linux-based machine. Good. And the important thing is that it has the file as well. This is the file, index.html. I'm interested to that something problematic might be there. What I can do, gentlemen, go to the browser, and in the browser, your browser of this here, and in the browser application, internet, and the browser is Chromium. So Chromium browser I'm starting. Security Onion is analyst, ANA, analyst. Password is CyberOps, CYBEROPS. But I'm not interested in Kibana for the time being. I'm interested in, I want to check this index.html, whether it has something bad because it has been shifted between the source and destination, between the two IP addresses. We have already done this Kibana, but for the time being, I'm not interested in Kibana. I'm interested in the VirusTotal, virustotal.com. VirusTotal. क्यों नेटवर्क नहीं है मेरे पास, है तो सही. Let me use Facebook. Yes, I am connected. So if I am connected with this CyberOps Security Onion operating system, so I make www.virustotal.com. What wrong I have done? Something spelling mistake? Virus total. It's www.virustotal.com. ध्यान नहीं खुल रहा, इसका मतलब कि मसला हमारे ब्राउजर का नहीं है, इसका मसला है. कोई ऑल्टरनेटिव? उनकी साइट डाउन है, लेकिन हम कोई अल्टरनेटिव देख लेते हैं. Let me that it works. तो अगर ये www.virustotal.com
So gentlemen, this is not our issue, but the problem is with the site probably. या मैं एक और काम करता हूँ, लेकिन इससे मेरा कनेक्शन शायद ड्रॉप हो जाए. Okay, gentlemen, you are with me? Yes, sir. Nice. तो अगर आप मेरे साथ ही हैं, तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि ये वायरस टोटल काम करता है कि नहीं करता. ऑलरेडी आपने ये करता है जी, तो ये जी आपके सामने आ गया. मैं इसी को यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और जेंटलमैन मैं इसको कहाँ पे जाता हूँ, अपने सिक्योरिटी ओनियन के पास जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि यहाँ जाओ. ये चला गया. नाइस. अब मुझे शक किस पे था, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना, मुझे शक था या है किस पे है, मुझे शक है कहाँ गया, ये इस फाइल पे, ये ए index.html फाइल पे मुझे शक है, जिसका साइज 13 बाइट्स है. मैं इस फाइल को यहां से पकड़ता हूं और इस पैकेट ट्रेस के ऊपर ड्रॉप कर देता हूं, और पैकेट ट्रेस को कहता हूं कि इसका मतलब है कि इस 3 ने कहा कि जी इसमें ट्रोजन है. एसेट नोट 32 एक वेल नोन एंटीवायरस प्रोग्राम है. इस तरह राइजिंग और इस सैंग4 इंजन 0 ने ये बताया कि ये बालवेयर है, ये इंडेक्स डॉट, और बाकी कहते हैं कि नहीं जी ये नहीं पकड़ सकी. लेकिन एटलीस्ट 3 ने कहा कि देयर इज समथिंग फिशी. 3 सिक्योरिटी वेंडर्स फ्लैग्ड दिस फाइल एज malicious. तो अगर ये बात दुरुस्त है कि ये मलेशियस है, इसका मतलब है जो इवेंट बनोरी ने कैप्चर किया, करेक्टली जो आइडेंटिफाई किया आपके सिक्योरिटी ओनियन ने, आपके सीगुअल ने, आपने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि इट इज करेक्टली आइडेंटिफाइड. इसका मतलब इट इज ट्रू पॉजिटिव. डज इट मेक सेंस जेंटलमैन और नॉट? Yes, sir. गुड. तो ये काम आप जैसे लोग, यानी कि 58 में से वायरस टोटल में 3, और उसमें जो ई नोट 32 है, ये एक वेरी वेल नोन ऑपरेटिंग वो है, एंटीवायरस है. तो वो कह रहा है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो फिशी बात इसमें है. अब आप इसकी बेस के ऊपर फर्दर इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप इसको क्लोज करें अपने नेटवर्क माइनर को, वापस जाएं अपने सीक्वल के पास और इसका ट्रांसक्रिप्ट को स्टडी करें. यानी कंप्लीट हिस्ट्री क्या हो रहा है, कंप्लीट हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी कि भाई एक कंप्लीट फाइल जो डाउनलोड हुई, जिसमें मैंने बताया कि एक तरफ आपका विंडोज का वो है मशीन है और दूसरी तरफ आपकी लिनक्स की मशीन है, उनके दरमियान जो बातचीत हुई है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद है. तो आप इसको भी रीड दे सकते हैं अपनी इस बात के ऊपर कि क्या वाकई जो 3 ने कहा कि जी इसमें कोई फिशी है, देखें कोई मसला है कि नहीं है. ठीक है. सो इस तरह आप जेंटलमैन अपने बात को अपने बॉस की तरफ पहुंचा देते हैं.
इसी तरह जेंटलमैन, अगर आप रीसेट को राइट क्लिक करें, मिसाल के तौर पे आपसे ये सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम जो अभी हमने डिफाइन किया था कुछ देर पहले, आप उसको एस्केलेट कर दें। अगर आप समझते हैं कि ये नहीं है कुछ भी तो एक्सपायर कर दें। इसका मतलब है कि मैंने अभी जैसे बताया कि अगर आपने देखा कि इनकरेक्टली उसने आपको दिखाया है, उसको रिमूव कर दें, एक्सपायर इवेंट। और आप उसके कमेंट्स भी दे सकते हैं कि जी मैंने ये चेक किया है और इसकी वजह से इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ है तो आप उसको एस्केलेट भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये अनऑथराइज्ड रूट एक्सेस थी या अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस थी, अटेम्प्टेड अनऑथराइज्ड एक्सेस था, वायरस का इन्फेक्शन था, रिकॉग्निशंस का प्रॉब्लम था, एनएसमैप हो रहा था, पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिस की वजह से ये प्रॉब्लम आया। यू कैन सी दिस एज वेल एंड फाइनली यू कैन, एज आई सेड, you can escalate it for your bosses. You can add a comment to this कि जी आप क्या समझ रहे हैं। क्या मैं आज के लेक्चर में आपको ये काम जो मैंने किया, विच इज अबाउट ये वाइट बोर्ड, जिसमें हमने कहा कि जी आप कलेक्शन देखें तो आपको ये कलेक्शन भी नजर आई, आपको जिस रूल की वजह से ये कलेक्शन हुई वो भी आपको पता चला, उसके हेडर और उसके टेक्स्ट भी आपने, डेटा भी आपने देखा, और फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि इन चार में से कौन सा मसला है। आपने वो मसला भी रिजॉल्व कर दिया, पता कर दिया, या तो आपने उसको रिमूव कर दिया अगर वो इनकरेक्टली आइडेंटिफाई था, अगर वो करेक्टली आइडेंटिफाई था तो सॉल्व इट, नहीं है तो एस्केलेट इट, अगर वो करेक्टली रिजेक्टेड था तो इसका मतलब वो यहाँ होगा ही नहीं, अगर इनकरेक्टली रिजेक्टेड था तो लाजमी तौर पे फिर आपको इसके बारे में सोचना होगा कि आपका एनडीएस जो है, आपका आईडीएस जो है, वो क्यों फेल हो गया, सिस्टम में क्या मसला था। तो दिस इज ऑल अबाउट what we have, what we normally do in the, so which means probably we have done good work about the security union today. Although I may tell you that this details, and you may go to your netacad.com. क्या कभी कभी जाते होते हैं कि नहीं ताबिश एंड बनोरी? Gentlemen, you will not find these details in your netacad. लेकिन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आपका अगर इंटरेस्ट है इस एरिया में तो वो फर्दर, क्योंकि ये वो काम है जो कि सिक्योरिटी के लोग सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठ के कर रहे होते हैं। आर यू कंफर्टेबल ताबिश एंड बनोरी? यस सर। ओके, सो आई स्टॉप हियर। कल हम देखते हैं कि हम क्या काम करते हैं। सो इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग समथिंग मोर, ताकि आपकी जो स्किल्स हैं, जो कि आप कल लिख सकेंगे, जी मुझे सिक्योरिटी यूनियन पे काम करना आता है, मुझे किबाना पे करना आता है, मुझे एलके पे आता है, मुझे सीक्वल पे आता है। तो ये चीज़ें आपने करनी भी हैं और अपने रिज्यूमे में ऐड भी करनी है। फाइन जेंटलमैन? यस सर, इंशाल्लाह। Inshallah ji. So okay, so if you don't have any question, then may I say Allah Hafiz to you, because I have another class at 9:30. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जो रूल था सर, मतलब बाकी सब तो क्लियर हो गया, पर से रूल की मुझे समझ नहीं आई, जो रूल्स होते हैं। ठीक है,